Hello everyone, welcome back to my channel RN ArchiVision. Today is a new video wherein I will be teaching you how to remove hatch tool in two different methods. Two easy and different methods. Something which no one tells you. You get to know this only once you start working on a professional platform. So this is a secret. So let's get started with the video. So first method हम यहाँ देख रहे हैं we have like the two rectangles over here. मैं पहली चीज ये करूँगी कि मैं पहले इनमें hatch लगाऊंगी and then I will show you how to remove it. ठीक है? So first thing is that मैं यहाँ से hatch tool use करूँगी. ठीक है? And then I'm gonna use the solid tool over here. यहाँ पे I have selected the color to be 9, that is gray. Hatch transparency मैंने रखा है 60 and now I'm gonna select my objects where I want the hatch. At times क्या होता है you need to make hatches in multiple areas at the same time, right? तो मैंने ये rectangle create किया है, ये rectangle को select कर लिया है, ये rectangle select कर लिया है and दो तीन और जगह मुझे करना है तो मैं सारे select कर लूँगी एक साथ, ठीक है? And then gonna click enter. ठीक है? अभी मैं when I'm trying to select my hatch ये दोनों एक साथ select हो जाएंगे, ठीक है? बिकॉज मैंने एक ही टाइम पे एक ही उससे मैंने दोनों पे किया है इसलिए एक ही साथ सेलेक्ट हो जाएंगे. बट नाउ मसला मुझे ये है कि मुझे बाद में याद आता है कि ये रेक्टेंगल पे मुझे हैच नहीं चाहिए whereas this rectangle I want the hatch. ओके अब मैं यहाँ पर डिलीट करने की कोशिश करूंगी तो जाहिर सी बात है दोनों एक साथ डिलीट हो जाएंगे. So now the main problem is that I need to remove the hatch only from this rectangle and not from this. So what I'm going to do is I'm going to select this rectangle, ठीक है, जहाँ पर दोनों hatches आपके select हो जाएंगे and then यहाँ पर at top you can see there is an option called remove. ठीक है, you're gonna select this remove. You're gonna select the rectangles or outline जहाँ पर आपको remove करना है hatch. ठीक है, I'm gonna select this rectangle followed by the space bar and yeah, that's like the first method. Simple, right? So दोनों hashes में से ये एक hash हमने remove कर दिया easily. ठीक है? Now moving on with the second important method. ये बहुत crucial method है and it's very necessary कि आपको पता होना चाहिए. There are like very few people who has an idea about this method. So please stay connected up till the very end before I complete the video. ठीक है? So यहाँ पर मेरे पास एक another room है. Okay, जहाँ पर I have the door and this hatch. ये hatch मैंने इसलिए लगाया because I had to show the flooring texture of that particular room. और यहाँ पर आप देख सकते हो ये यहाँ पर फ्लोरिंग मैंने दिखाया है. चलिए ये बात तो ठीक है बट यहाँ डोर के पास भी फ्लोरिंग नजर आ रही है. जाहिर सी बात है फ्लोर के पास आपको डोरिंग बिल्कुल नहीं नजर आना चाहिए. दिस इज समथिंग विच इज रॉन्ग. आपको ये हैच में से यू नीड टू रिमूव दिस पोर्शन. ओके ये डोर के पास का जो पोर्शन है ओके ये पोर्शन निकालना है आपको. ओके एंड बाय कीपिंग दिस पोर्शन अलाइव. अगर मैंने आपको फर्स्ट मेथड इस्तेमाल करके दिखाया ओके फॉर एग्जांपल आई विल सेलेक्ट दिस, आई विल जस्ट यूज द रिमूव टूल एंड ट्राई रिमूविंग दिस. ओके सो सारा रिमूव हो जाएगा. ओके मुझे ये नहीं चाहिए बिल्कुल भी. ठीक है, सो व्हाट आई एम गोना डू इज देयर इज दिस वेरी इंपॉर्टेंट मेथड. कीप अ नोट ऑफ इट एंड हमेशा ये याद रखना कि ये मेथड इज गोना बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड वर्किंग ओवर हाउ टू रिमूव दिस. ठीक है, नाउ फर्स्ट थिंग व्हाट आई एम गोना यूज इज आई एम गोना यूज माय पॉलीलाइन. Okay, the command is PL followed by the space bar and I'm going to randomly create an outline of this dude. ठीक है, so मैं यहाँ से start करती हूँ. Okay, and I'm going to create an outline. It should not be perfect. It's just like a normal outline that you have to create. It need not be perfect. ठीक है, जैसा आप बनाना चाह रहे हैं, जैसा outline create करना चाह रहे हैं, it should like cover maximum portions, but it's fine. Okay, and यहाँ पर आके end कर दोगे. So this is basically an outline that I have created. ठीक है, हम ये आउटलाइन को सेलेक्ट करेंगे एंड अंडर दिस MISC सेक्शन यू हैव दिस क्लोज्ड ऑप्शन, राइट? यहाँ पर आपका नो गिवन है. सो व्हाट यू गोना डू इज यू गोना टर्न दिस ऑन एंड यू गोना कंसीडर दैट टू बी यस. ठीक है, ये यस हो गया एंड देन अगेन यू गोना सेलेक्ट दिस आउटलाइन. ठीक है, यू गोना यूज योर कमांड ट्रिम. ठीक है, उसका शॉर्टकट मेथड क्या है? TR फॉलोड बाय द स्पेस बार एंड देन ये अंदर का पोर्शन आपको निकालना है. isn't it? You're gonna simply delete this portion जहां पर भी आपको रिमूव करना है. ओके मैं फिर से दिखाऊंगी. ओके इफ यू वांट यू कैन जस्ट डू दैट अलोंग विथ मी सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ठीक है, यहाँ पर मुझे ये पोर्शन निकालना था. मैंने ये पहले आउटलाइन सेलेक्ट किया था, आउटलाइन बनाया है, आउटलाइन सेलेक्ट किया है. यहाँ पर MISC के अंडर आई हैव कंसिडर्ड दैट टू बी यस एंड देन एस्केप दबा दीजिए आप. ठीक है, डी सेलेक्टेड बेसिकली. सेलेक्ट द आउटलाइन अगेन, use the trim tool
ओके, फॉलोड बाय द स्पेस बार, एंड जहां पे भी आपको ट्रिम करना है ये पोर्शन की हैच को निकालना है, ट्रिम इट आउट एंड क्लिक एंटर, दैट्स इट। ठीक है, ये पोर्शन का निकल गया है, एंड ये जो आउटलाइन आपने बनाया है ये दोबारा से आप डिलीट कर दीजिए। सो दिस लुक्स प्रीटी नीट, इजंट इट? तो ये फ्लोरिंग क्या है, आपका हैच भी रह गया है, एंड ये पोर्शन में हैच नहीं चाहिए था, एंड वो हैच भी रिमूव हो गया। Isn't it simple? So this is something very important and very useful in order to work on with your floor plans, okay, especially when you're working over your detailings. Professional platform में इतना neatness रखना काफी ज़्यादा important होता है. So stay connected with me for the next videos as well. इस तरह के important topics, important tips and tricks मैं ज़रूर बताऊंगी आपको. So stay connected with me and do take a look over all the videos on my channel. I hope you have loved watching these two ways of removing the hatch tool, and I would hope this was very helpful for you all to learn, and I know this is going to be very helpful for you all if you work on a professional platform. So thank you so much for watching. Do like my videos, share it with your friends, do subscribe my channel, and stay connected with me, and I'll meet you all with a new video next time, inshallah. Till then, take care and bye bye.